Hello friends, today we are here to discuss IBPS PO PT Model Paper 1 English Language. It's just a model paper that has been made on the basis of past year's questions. पिछले साल जो भी पूछा गया है और पिछले सालों में जो कुछ पूछा गया है उसके आधार पर कि शायद इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आएगा ये तो कोई नहीं जानता है, चेंज हो जाता है, कभी कभार कुछ हो जाता है. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दीज प्रैक्टिस पेपर्स, दीज एंड अदर्स दैट यू गेट एज प्रैक्टिस सेट्स, देन यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. और उससे पहले, as I always say, reading is the first thing, reading with a close eye. तो अगर वो काम आप करते रहें तो आपका काम आसान रहेगा. सवाल चाहे जो भी पूछा जाए, you will be in a position to answer them properly, to answer them well. तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ. Let us begin. Yes, so the first 10 questions, questions 1 to 10, are reading comprehension questions. Read the following passage carefully and answer the questions given below it. Certain words are given in bold to help you locate them while answering some of the questions. The sweeping wave of loan waivers has generated serious debates across the country on their economics and likely outcomes. ये पैसेज किस चीज के बारे में है? लोन वेवर्स. द स्वीपिंग वेव ऑफ लोन वेवर्स, ये उस समय का पैसेज है जबकि कोई लोन वेवर आया होगा. तो स्वीपिंग वेव ऑफ लोन वेवर्स यानी एक के बाद एक लोन वेवर्स आते जा रहे हैं, एंड इट विल डील विद द पास्ट लोन वेवर्स एज वेल. हैज जनरेटेड सीरियस डिबेट्स अक्रॉस द कंट्री. डिबेट चल रहा है, इस पर वाद विवाद चल रहा है कि क्या ये अच्छी चीज है, क्या ये बुरी चीज है, इससे लोगों को फायदा होगा, लोगों को नुकसान होगा, इस पर वाद विवाद चल रहा है. सो ऑन देयर इकोनॉमिक्स एंड लाइकली आउटकम्स, किन किन बातों पर डिबेट चल रहा है? ऑन देयर इकोनॉमिक्स, कि वो ये कितना वायबल है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब आपको खर्चा कितना लगता है किसी चीज में और उससे लाभ कितना होता है. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. और लाइकली आउटकम, आउटकम मतलब क्या हुआ? रिजल्ट, कि उससे क्या मिलने वाला है. तो टिल डेट 12 states have announced loan waiver amounting to more than rupees 2 lakh crore. 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है. तो 12 स्टेट्स ने जो लोन वेवर अनाउंस किए हैं उसमें 2 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है. लोन वेवर कैन नॉट बी ए सोल्यूशन. नाउ द ऑथर सेज, अब यहाँ पे ऑथर का व्यू आ जाता है, लोन वेवर cannot be a solution to address the agrarian crisis. Agrarian crisis, farm से related. Agrarian means related to farming. So agrarian crisis जो हो गया है उसके लिए loan waiver is not a solution. What is waiver? Waiver comes from the word waive. Waive means to choose not to have your right. और इससे वेव से नाउन बनता है वेवर. तो वेव में आप चूज कर रहे हैं टू नॉट टू हैव योर राइट. यानी बैंक्स का तो राइट है कि वो लोन जो दे रहे हैं लोन्स उसे वापस लें, विथ इंटरेस्ट लें, लेकिन बैंक्स इसको वेव कर रही है. यानी बैंक्स डिसाइड कर रही है दैट वी विल नॉट टेक बैक द मनी दैट वी हैव गिवन टू यू. प्रतीक धमेदार, गुड मॉर्निंग. गोविंद कुमार सर, आपका ओनली इंग्लिश लाइव क्लास अवेलेबल है क्या? ये समझ में नहीं आया गोविंद कुमार, ओनली इंग्लिश लाइव क्लास अवेलेबल है क्या? मतलब मैथ्स और रीजनिंग भी आप चाहते हैं कि हम करें? नहीं, सारा चीज तो नहीं हो सकता है, इंग्लिश भी कर रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो ओनली अ फ्यू क्वेश्चन, फ्यू classes, because there are other teachers also. So, and Mona Sharma, good morning. So we were talking about loan waiver. Loan waiver cannot be a solution to address the agrarian crisis. Yani कर्ज माफी, loan waiver. Instead, the government must look for long-term solutions. Now, this is a short-term solution. Loan waiver कर दिया तत्काल तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इससे in the long run you're not going to benefit.
There is also the danger, and what is the second danger? The danger of intense competition among political parties. Political parties में होड़ लग जाएगी किस बात की? To win by promising the farm loan waiver and projecting themselves as the protectors of farmers, becoming the norm of the day before each election. Intense competition among the political parties will become the norm. ये normal हो जाएगा, routine हो जाएगा. हर political party क्या करेगी? वो कहेगी कि हम लोन वेवर कर देंगे आपका, इसलिए आप हमें वोट दें, हम आपके हिमायती हैं, we are your protectors, हम आपके संरक्षक हैं. So this is the danger that the author feels that loan waivers may have. Now let us look at it in detail. India has a long history of loan waivers. So after that, he goes into the history of loan waivers, he or she, who, whatever. In 1990, the then Prime Minister announced an agricultural debt relief scheme totaling to rupees 10,000 crore for agricultural borrowers. अब ये देखिए 1990 में भी हुआ था 10,000 करोड़, उस जमाने के लिए काफ़ी था. Announced an agricultural debt relief scheme. In the same year, a similar scheme was announced by then Chief Minister of Haryana. Haryana के जो उस समय के Chief Minister थे, उन्होंने announce किया waiving rupees 227.5 crore of farm loans by banks and cooperatives. ये हरियाणा state में हुआ. Over the next decade, यानी 90s के जो दशक में पूरा, despite the RBI's warnings of the adverse consequences of such measures, several states resorted to them. Now see, despite the RBI's warning of the adverse consequences, consequence क्या होता है? Result, परिणाम. और adverse consequence क्या होता है? जो negative परिणाम, किसी चीज के अगर adverse consequence होंगे, यानी उसका negative परिणाम होगा. तो RBI ने warn किया था that if you go for loan waivers, these will have adverse consequences. But despite that warning, उसके बावजूद several states resorted to them. क्योंकि politics वहाँ हावी हो जाता है, so several states resorted to them. Resorted to them means as a last resort. Like if you're not, you have to choose something, it's bad, but still you have to choose that because you don't have any option. So इस तरह की चीज़ को कहते हैं resort. So several states resorted to them. In 2008, the UPA government announced one of the largest debt waivers in history. The agricultural debt waiver and debt relief scheme waived rupees 60,000 crore spread across 237 districts and reaching 30 million farmers. आप देख रहे हैं कितना बड़ा scale है इसका. Over the next few years, the program received widespread criticism from economists. सरकार तो ये काम करती है, political parties ये काम करती है, but economists are not in favor of that. What do economists say? Economists criticize it, widespread criticism. तो criticism पूरा हो रहा है, economists क्या कर रहे हैं? They doing widespread criticism. However, this did not stop governments at the state level from making further loan waiver announcements. And now, more than 10 states have joined the club. This did not stop. This का मतलब क्या हुआ? Widespread criticism from economists. So widespread criticism from economists होने के बावजूद ये क्या हुआ? This did not stop governments at the state level from making further loan waiver announcements, and now more than 10 states have joined the club. तो economists एक तरफ criticize करते रहे, दूसरी तरफ जो governments थे, state governments, वो उन्होंने अपना काम जारी रखा. काम क्या था? Loan waiver करते रहे. And now more than 10 states have joined the club. तो इस क्लब में यानी लोन वेव करने वाले लोगों में 10 states join कर चुके हैं. If loan, now the author asks a pertinent question. क्या पूछ रहे हैं author? If loan waiver was the solution to agrarian distress, why hasn't it prevented farm incomes from decelerating and farmers from committing suicide? कि अगर इतनी ही अच्छी चीज है loan waiver, if loan waiver was the solution to agrarian distress, farm से related जो भी trouble, distress मतलब जो आपका trouble है,
चिंता है, परेशानी। तो इफ लोन वेवर वाज द सॉल्यूशन, लोन वेवर ही अगर सॉल्यूशन था इसका, व्हाई हैजंट इट प्रिवेंटेड फार्म इनकम्स फ्रॉम डिसेलरेटिंग? तो फार्म इनकम्स फिर डिसेलरेट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज डिसेलरेट? एक्सेलरेट? आप जानते हैं एक्सेलरेट क्या होता है? स्पीड किसी चीज का, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। डिसेलरेट होता है मतलब कि गाड़ी की स्पीड जितना डिसेलरेट हो रहा है तो वो नीचे की ओर अब जा रहा है। सो एक्सेलरेट का उल्टा डिसेलरेट। यानी स्पीड जो बढ़ने की गति है उसमें कमी आ गई है। सो दैट इज डिसेलरेट, एक्सेलरेट, डिसेलरेट। So why hasn't prevented farm incomes from decelerating? Decelerating दोनों हो सकता है, बढ़ रहा हो लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा हो, और या फिर घट भी सकता है। And farmers from committing suicide, farmers are still committing suicide. So what is the benefit of loan waiver according to the author? He then goes on to support his statement. Ample evidence, ample मतलब काफी, ample evidence and research confirm that loan waiver has not increased agricultural productivity. It's a clear verdict that loan waiver has not increased agricultural productivity. कृषि में जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। And in fact resulted in an increase in moral hazard among the eligible household. Moral hazard, hazard क्या होता है? जो हैजर्ड होता है मतलब डेंजर, जो समथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट डेंजर। तो मोरल डेंजर उसमें है कि एक तरफ तो आप, क्योंकि वो पैसा लेके कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा उसको लौटाने का दायित्व उन पर नहीं रह जाता है। सो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स मोरल हैजर्ड अमंग द एलिजिबल हाउसहोल्ड्स। द कैग रिपोर्ट फॉलोइंग द 2008 लोन वेवर clearly brought out rampant corruption and exclusion and inclusion errors in identification of beneficiaries. इसके और भी पहलू हैं. There are other aspects also. Yes, Shailendra Lachoria says danger about hazard. Hazard का meaning danger है, सही है शैलेंद्र. The CAG report following the 2008 loan waiver clearly brought out rampant corruption. Rampant मतलब सब जगह प्रिवेल कर रहा है. It's prevailing everywhere. That is rampant. जैसे कोई बीमारी होती है, एपिडेमिक के तौर पर आती है, तो हम कहते हैं it is rampant. Malaria is rampant, dengue is rampant, which is not good. नहीं हो, ये सब तो अच्छा है. But similarly, corruption is rampant. So loan waiver से क्या देखा गया कि इसमें rampant corruption है and exclusion and inclusion errors in identification of beneficiaries. Beneficiaries जिनको benefit मिलना चाहिए. तो उनका जो लिस्ट बन रहा है उसमें एरर्स आ रहे हैं, बोथ ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन. जिनको रहना चाहिए वो उस लिस्ट से बाहर हैं, जिनको नहीं रहना चाहिए कुछ ऐसे लोग हैं जो उस लिस्ट में भीतर हैं. तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स आते हैं. वी ट्राई टू ड्वेल अपॉन दिस एक्सपेंसिव स्कीम एंड इट्स डिजायरेबिलिटी फ्रॉम द इकोनॉमिक, सोशल एंड फार्मर्स वेलफेयर पर्सपेक्टिव्स. वी ट्राई टू ड्वेल अपॉन. नाउ ड्वेल मीन्स टू लिव, बट टू ड्वेल अपॉन मीन्स व्हाट? To talk a lot about. To dwell upon something, to talk a lot about something. So we try to dwell, मतलब डिटेल में किसी चीज को बताना, that is dwell upon. So we try to dwell upon this expensive scheme and its desirability from the economic, social and farmers welfare perspectives. As per the latest data available from NABARD, All India Rural Financial Inclusion Survey. अब ये देखिए कैग रिपोर्ट से हम बाहर निकल गए. अब क्या आ गया? NABARD ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे. तो इसके डेटा के हिसाब से 2016-17 का जो डेटा है, ओनली 26% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन छत्तीसगढ़, 35% इन मध्य प्रदेश एंड 31% इन राजस्थान availed themselves of loan from any source during 2015-16. 2015-16 के साल में
लो एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं, रूरल हाउस होल्ड्स में जो लोग हैं, ऑफन दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो ये रूरल हाउस होल्ड्स का एक सर्वे है कि इसमें से कितने परसेंट लोगों ने लोन लिया। तो छत्तीसगढ़ में 26%, मध्य प्रदेश में 35% और राजस्थान में 31%। Now, अब इसमें भी आगे देखें, the percentage of institutional borrowers were close to 16, 21 and 19% respectively in छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश and राजस्थान। यानी जो 26% वहां दिखा रहा था फिगर, वो टोटल लोन लेने वाले हैं। अब उसमें अगर हम कहें इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स, यानी मनी लेंडर्स से नहीं लेना, इंस्टीट्यूशन से, बैंक या एनबीएफसी से जो लोग ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स। तो उनकी संख्या और कम है, वो 26 ना हो के 16, 35 ना हो के 21 और 31 नहीं हो के 19। So 26, from 26 it goes down to 16, from 35 it goes down to 21, and from 31 it goes down to 19. So the bottom line is here, 16, 21 and 19% respectively in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. So what is the inference? One can see that the waiving of loans benefits only about 1/5 of agricultural households. Now if you note this figure, 16, 21 and 19%. That is how much? 20% is 1/5. तो 1/5 के आसपास मंडरा रहा है figures, hovering around 1/5. So loan benefit, the waiving of loans, अब जब आप loan waiver करते हैं तो आप इन्हीं households को तो सिर्फ benefit कर रहे हैं. The other households are not getting any benefit. So the waiving of loans benefits only about 1/5 of agricultural households and creates बेनिफिट ही नहीं है, बल्कि बेनिफिट ना मिलना एक चीज है, बट इट्स गोज, द ऑथर सेज मोर देन दैट, क्रिएट्स डिसइंसेंटिव्स। इंसेंटिव जब किसी चीज के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं, डिसइंसेंटिव जब किसी चीज के लिए आप डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। तो इट क्रिएट्स डिसइंसेंटिव्स फॉर दोज हु यूज देयर ओन रिसोर्सेज और आर अनएबल टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोन्स। जो लोग अपने रिसोर्सेज से करते हैं, यानी कोई लोन नहीं लेते हैं वे, या फिर लोन लेते तो हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं मिलता है, मनी लेंडर से मिलता है, उन दोनों के लिए तो ये डिसइंसेंटिव का काम करता है। सो वेयर आर यू बेनिफिटिंग? यू आर बेनिफिटिंग ओनली 1/5 ऑफ द पीपल, द रिमेनिंग 4/5 आर एट अ डिसएडवांटेज। दैट्स व्हाट द ऑथर सेज। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम बेनिफिटिंग ओनली इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स, yes, Anand Mishra, good morning. Yes, you are right. Discourage, disincentive acts as a discouragement. The only thing you have to correct is the spelling, DISCOURAGE. Apart from benefiting only institutional borrowers, loan waivers would be a heavy drain on the financial resources of both the states and the center. Now, what is a drain? You drain water from somewhere, which means you make something empty by pouring out the liquid. जैसे अगर चावल पानी में हो तो आप उसको क्या करेंगे? पानी को ड्रेन कर लेंगे। सो यू विल मेक इट एम्प्टी बाय पोरिंग आउट द लिक्विड। नाउ दिस इज व्हाट, जो नाली है वो क्या काम करता है? उसको हम कहते हैं ड्रेन। कोई ड्रेन में कोई चीज चला गया तो वो क्या कर रहा है? लिक्विड को खींच ले रहा है। तो जो डिवाइस खींचता है उसको भी आप कहते हैं, इट्स ओके आनंद मिश्रा, इट वाज जस्ट अ स्लाइट मिस्टेक, but please be careful about your spellings because they do ask these things in your exams. And if not so much, even in objective types, लेकिन objective type में नहीं तो subjective जब आप लिखेंगे, descriptive paper जब आप लिखने लगेंगे, वहाँ तो आपको बहुत ही ध्यान देने का होगा। Good morning, Dilip Vishkarma. But be careful and try to join your classes in time because that will help. Now, drain is make something empty
by pouring out the liquid. तो drain की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ क्या है, यहाँ कहाँ से निकल जा रहा है, जैसे heavy drain, क्या loan waivers would be a heavy drain on the financial resources of both the states and the center. किसको खींच लेगा पूरा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टेट्स और सेंटर के, उन्हें ड्राई कर देगा, उनको सुखा देगा बिल्कुल, which may adversely affect public investments in agriculture and irrigation and dissuade private investments. अब ये क्या करेगा, this is a very important sentence. Loan waivers would be a heavy drain on the, एक तो ये है कि loan waivers would be a heavy drain on what? On the financial resources of both the states and the center, which may adversely affect. Now this may adversely affect, adverse अभी आपको बताया था negative, so adversely affect having negative consequences. So this may have negative consequences on what? On public investments in agriculture and irrigation. So this is one. One will be what? This may adversely affect public investments in agriculture and irrigation, क्योंकि सब पैसा तो लोन वेवर में चला जा रहा है, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन में आप तो कम दे पाएंगे. एंड सेकेंडली dissuade private investments, because लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि अगर बैंक से लोगे तो कल होके ये पैसा माफ हो जाएगा, तो अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करो, क्योंकि वो पैसा तो माफ नहीं होगा. So that will dissuade, again discourage private investments. This has been the case at the central level with agricultural investments declining. This has been the case at the central level with agricultural investments declining in real terms in the last few years. And this is one of the reasons why agricultural investments have been declining in real terms in the past few years. Several studies have shown that facilitating access to institutional credit can increase farmers' income by 15 to 20%. Now this is another way of looking at things. Facilitating access to institutional credit. आप access को facilitate कीजिए, आप उनका reach बढ़ाइए. Facilitate, make something easy. Facility देना. So if you facilitate access to institutional credit, that can increase farmers' income by 15 to 20%, which will be instrumental in improving their living standards. With the help of that, you can improve the living standards of farmers. Now the amount foregone on waiving loans could give better returns if invested in agricultural research and development, markets, irrigation, or even in enhancing the penetration of institutional credit. Foregone. ये किस वर्ड से बना है? Forego. Now forego is also written as forgo. Forgo. So forgo means what? Decide not to have something that you would like to have. यानी आप कोई चीज अगर फॉरगो कर रहे हैं, यानी आपको पसंद है उस चीज को रखना है, एंड स्टिल यू आर मेकिंग काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, आप फॉरगो कर जा रहे हैं. जैसे बैंक को लोन अगर वापस मिल जाए तो बैंक के लिए तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट होगा, बट अंडर द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट बैंक डिसाइड्स टू फॉरगो दैट अमाउंट. ठीक है, छोड़ देते हैं. सो दैट इज अमाउंट फोरगॉन. तो ये जो अमाउंट फोरगो हो रहा है, ऐसे फोरगॉन का एक और यूज होता है. इफ आई टेल यू फोरगॉन कंक्लूजन, जस्ट टेक दिस नोट. फोरगो मीन्स व्हाट? फॉरगो, विच मीन्स डिसाइड नॉट टू हैव समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव. तो दूसरा इसका मतलब क्या होता है? फोरगॉन कंक्लूजन, वहां पे यूज होता है अक्सर ये, जो इससे अलग है मीनिंग. लेकिन व्हाइल वी आर एट इट, let us see that also. Foregone conclusion, इसके लिए अक्सर यूज होता है जब हम कहते हैं कि ये तो होना ही है, अवश्यम भावी. If now this conclusion just cannot be prevented, it's a foregone, मुझे पहले ही पता है कि ऐसा ही होगा, then we say it is a foregone conclusion. So that is another usage of this
forgo. But here, it's not this. It's a different meaning. The meaning is foregone. यानी leaving. So the amount foregone on waiving loans, अब ये जो amount है, this could give better returns. अगर हम इसको कहाँ लगाएं? If invested in agricultural research and development, markets, irrigation, even in enhancing. Enhancing means increasing the penetration of institutional credit. So, yes, mind में आता माफ हो जाएगा. Anand Mishra is saying that माफ हो जाएगा लोन. हाँ, उनके जो लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं लेते हैं उनके लिए कैसे ये डिस्करेज करता है, इसके बारे में बात हो रही है. एंड सर पीडीएफ मिलेगा, किस चीज़ का ये पीडीएफ लेना चाह रहे हैं आनंद मिश्रा? पीडीएफ तो आपको जा रहे हैं, लेकिन ये क्लास का पीडीएफ एज सच नहीं मिलेगा. क्लास तो आप अटेंड करेंगे और ये आपको आपके डैशबोर्ड पर रहेगा फिर, लेकिन लाइव वो नहीं रहेगा, फिर आप बाद में उसको देख सकते हैं. सो यू डोंट नीड टू टेक, यस इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग नोट्स, नो, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लास. और नोट आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं तो यू कैन अगेन कम बैक टू दिस in the form of video and then watch it. Now let us come to questions. So what is or are the downside of the farm loan waiver? I hope Anand Mishra that answers your question. Now we come to the questions asked by the examiner. What is or are the downside of the farm loan waiver? Answer on the basis of the given passage. डाउनसाइड यानी क्या हुआ? नेगेटिव साइड. उसका डिसएडवांटेज क्या है फार्म लोन वेवर का? सो फार्म लोन वेवर कैनॉट बी ए सोल्यूशन टू एड्रेस द एग्रेरियन क्राइसिस. लेट अस गो बैक टू द फर्स्ट पैरा. सी, लोन वेवर कैनॉट बी ए सोल्यूशन टू एड्रेस द agrarian crisis. So this has categorically been told by the author. Loan waiver cannot be a solution. So farm loan waiver cannot be a solution to address the agrarian crisis. So ये तो है एक downside. Then second is loan waiver will give rise to intense competition among the political parties to win elections by promising the farm loan waiver. इसकी भी हमने बात की थी वहाँ. एक बार फिर से देख लें उसको. See here. There is also the danger of intense competition among the political parties to win by promising the farm loan waiver. इसी की बात वहां पे हो रही है. Intense competition among the political parties to win elections by promising the farm loan waiver. So even this is one of the downsides, negative. The burden of loan waiver is ultimately shifted to common taxpayers. ये दो के बाद we go down to India has a long history of loan waivers और यहाँ पे फिर जो इनका अप्रोच है वो बदल जाता है. तो पूरे पैसेज में कहीं पे ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है कि दिस बर्डन इज शिफ्टेड टू, कौन पे करता है उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है. ऑल्दो ये सही है, ये बात तो सही है कि अगर सरकार पैसे देगी तो कहाँ से देगी? अल्टीमेटली तो कॉमन टैक्स पेयर्स के ही पैसे से देगी. बट सिंस दिस हैज नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज, we can, because see the question answer on the basis of the given passage. इस बात का आप जरूर ध्यान रखें that you have to keep the passage in mind. You may infer from the passage, आप वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन पैसेज के बाहर सोच नहीं सकते हैं. पैसेज में कुछ दिया हुआ है वहाँ से लिंक कर दें, वो पॉसिबल है, वो होता है, लेकिन आप उसको अपने जनरल नॉलेज को सीधे बाहर से आरोपित नहीं कर सकते हैं. सो द बर्डन ऑफ लोन वेव, दिस is not downside according to the passage. So our answer will be what? Only A and B. So one is only A and B. Let us now come to question number 2. Which of the following statements is not true in the context of the given passage? It was the UPA government that announced one of the largest debt waiver schemes in history. ये तो mentioned था.
एक बार आप फिर देख लीजिए. Go to the second para. Yes. In 2008, the UPA government announced one of the largest debt waiver schemes in history. In 2008, the UPA government announced one of the largest debt waiver schemes in history. So this has clearly been mentioned there. So this is true. Now, the economists never appreciated the farm loan waivers. Again, if we go back there, economists का approach आपको बताया था. एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ. Over the next few years, the program received widespread criticism from economists. तो economists क्या कर रहे हैं? Widespread criticism कर रहे हैं. Yes, Anand Mishra says A and B follow. A and B follow for one. Yes. वन के लिए ठीक था आपका आनंद मिश्रा. ए एंड बी फॉलो. और अब हम वेवर की बात कर रहे हैं. दिलीप विश्वकर्मा, दैट्स व्हाट आई से एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस, बट सिंस यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेट अस गो बैक. व्हाट इज वेवर? एक बार फिर से आपको सी इट्स देयर. ये हमने जो बात किया था, इट्स देयर. वेव मीन्स व्हाट? टू चूज नॉट टू हैव योर राइट. जो चीज आपका अधिकार है आप उसे माफ कर देते हैं, तो उसको कहते हैं वेवर. राजन शर्मा, गुड आफ्टरनून. सो यू चूज नॉट टू हैव योर राइट, यानी बैंक ने लोन दिया और डेटर से उसे पैसा लेने वापस लेने का राइट है. अब वो कहती है नहीं, मैं ये पैसा नहीं लूंगा, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है. गवर्नमेंट के कहने पर बैंक कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगा. सो दैट इज वेवर. यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो लोन वेवर मीन्स व्हाट? कर्ज माफी. लोन वेवर is what? कर्ज माफी. So I hope you get that right. Yes, so where were we? Back to our question. The economists never appreciated the farm loan waivers. So this is also true. Now the RBI, Satish Kumar, good afternoon. The RBI did not favor the loan waivers by state governments. The RBI did not favor the loan waivers by state governments. Now let us see RBI ने क्या कहा था. Yes. Despite the RBI's warning of adverse consequences of such measures. इसका मतलब क्या है कि RBI भी ये कह रही है कि लोन वेवर अच्छी बात नहीं है. So RBI did not favor the loan waivers by state government. This is also true. Now our question was, which of the following statements is not true? So none of these is not true. All are true. All are true. Now see, ये थोड़ा सा लॉजिकल है. All are true. तो यहाँ क्या है? नॉट ट्रू. ए नॉट ट्रू है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. आप एक तरह से ये देख रहे हैं कि फॉल्स की तरफ जा रहे हैं. नॉट ट्रू और फॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. फॉल्स में आपको प्रूफ चाहिए उसको फॉल्सिफाई करने के लिए. नॉट ट्रू में सिर्फ देखना है कि ट्रू है या नहीं है. तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है. तो नॉट ट्रू तो कोई नहीं होगा इनमें से. दैट इज वाई यू से नन ऑफ दीज. नाउ नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैव बीन द इंपैक्ट्स ऑफ फार्म लोन वेवर्स? Impacts of farm loan waivers. एक बार पैराग्राफ 3 को हम थोड़ा ठीक से पढ़ लें तो काम हो जाएगा. Paragraph 3 is where? It's here. However, this did not stop government state level from making further loan waiver. Then if loan waiver was the solution to agrarian distress, why hasn't it prevented farm incomes from decelerating and farmers from committing suicide? एक बार वहां देखें जरा क्वेश्चन को. Owing to farm loan waiver, the income of farmers has registered a positive growth. Now there we talked about decelerating farm incomes. Decelerating farm incomes
पॉजिटिव ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा आपको बताया कि डिसेलरेशन का मतलब क्या हुआ। आनंद मिश्रा says 5 is correct in second question. Yes, Anand Mishra, the answer is 5 for second question. Now we are at question number 3. So income of farmers has registered a positive growth. Of deceleration, so we cannot conclude whether the growth is positive or negative. So we just cannot say that it has been positive. और जिस तरह से spirit है author का, वो तो यही दिखा रहा है कि और growth शायद कम हो गया है. So this has not been the impact. Then this scheme has helped reduce number of suicides committed by farmers. No, the author is questioning that. Why hasn't it prevented farmers from committing suicide? Which means कि ये कम नहीं हुआ है suicide. So the help reduce the number of suicides? No. Then this scheme has helped increase agricultural productivity. एक बार वहाँ फिर देखें. ये देखिए fourth line. Loan waiver has not increased agricultural productivity. So clear verdict. Loan waiver has not increased agricultural productivity. Helped increase agricultural productivity? No. So again, what have been the impact? None of these. So once again, you have this, none of these. Anand Sharma says B is correct. In which question? While you are answering the question, please mention the question number also. So that becomes easy. Because B is correct. In any case, here, B is not correct, either in 2 or in 3, whichever question you take. Rajan Sharma says question 2. 2 for which one? In question number 2. No, B is not correct in 2, B is not correct in 3. So this is what we are getting as answer. Now let us move on to question number 4. What was or were the observations of the CAG following the 2008 loan waiver? There was one line about CAG. Let us go back to that. CAG, yes, the CAG report. Here is the word, CAG report. What does the CAG report say? Following the 2008 loan waiver, the CAG report following the 2008 loan waiver clearly brought out what? Rampant corruption and exclusion and inclusion errors in identification of beneficiaries. Question number 3, D is correct. That's what Anand Mishra says. Question number 3, let me go back to that. Yes, not yes. So question number 3, the fourth choice. Yes. So do you have D written there? In my case, I think it's 4. ABC is what you have here, and then you have 1, 2, 3, 4, 5. So 4 is correct in question number 3. Now we are coming back to question number 4. That loan waiver brought out rampant corruption and exclusion and inclusion errors in identification of beneficiaries. So this is what we read, CAG report wale line se. Then the next is only 26% of rural households in Chhattisgarh, 35 in Madhya Pradesh, 31 in Rajasthan availed themselves of loan from any source during 2015-16. 26 in Chhattisgarh, 35 in Madhya Pradesh. This line was also there, 26 in Chhattisgarh, 35% in Madhya Pradesh. But where has this data come from? This has not come from CAG report. This has come from NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey. So this will also, so this cannot be correct. Because we have been asked observations of the CAG. So please bear in mind, we have to keep ourselves focused only to the CAG report. So ये नहीं है.
or waiving of loans benefits only about 1/5 of agricultural households and creates disincentives for those who use their own resources or are unable to avail themselves of institutional loans. ये भी बात है, but this is again the author's inference, so not CAG. So our answer will be 1. Yes, Asutosh. Anand Mishra says D to bola hu sir ji. Yes. आनंद मिश्रा, what I was saying कि D नहीं हो के शायद वहाँ 4 होगा, 1 2 3 4 5 के टर्म्स में है, A B C D E के टर्म्स में नहीं है, A B C के टर्म्स में. So that was what I was referring to. Like Ashutosh Singh says 4 का 1 is correct. He doesn't say A is correct, he says 4 का 1 is correct. तो आंसर चॉइसेस जो है वो A B C D E में नहीं होके 1 2 3 4 5 में है. That was what I was referring to. तो आशुतोष now Ashutosh Singh says 4 ka 1 is correct, and yes, he's right. Let us move on to the next question, question number 5. What is or are the effects of allowing farm loan waivers? Answer on the basis of the last paragraph. Allowing farm loan waivers results into a heavy drain on the financial resources of both the states and the center. ये तो clearly mentioned था वहाँ पे. Last paragraph में अगर हम जाएं तो yes, loan waivers would be a heavy drain from the financial resources of both the states and the center. तो यहाँ से आप पहला कुछ ले सकते हैं. Yes. And then, doing so adversely affects public investments in agriculture and irrigation and dissuades private investments. ये भी वहाँ पे दिख रहा था. It may adversely affect public investments in agriculture and irrigation and dissuade private investments. तो यही बात वहाँ लिखी हुई है. So this is also correct. Now third is, doing so can increase farmers' income by 15 to 20%, which may improve their living standards. अब देखिए, doing so यहाँ किसको रेफर कर रहा है? Doing so रेफर कर रहा है allowing farm loan waivers. ये बात तो सही है, लेकिन C वाला क्या सही है? एक बार फिर से वहाँ देखिए. ये जो फायदा मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? Facilitating access to institutional credit, last पैरा में दिया हुआ है, can increase farmers' income. So not farm waiver, loan waivers. Facilitating access to institutional credit can increase farmers' income by 15 to 20%. So what you are seeing here, the third choice is wrong. So what are the effects? A and B. So our answer will be 1. A सही है, B सही है, इसीलिए 5 का answer 1 होगा. Yes, Ashutosh Singh, you have got the answer right. Option 1 is correct. Now choose the word which is most similar in meaning to the word or group of words printed in bold as used in the passage. Resorted. Yes, several states resorted to them. Despite the RBI's warning of adverse consequences of such measures, any loan waivers, several states resorted to loan waivers. You have to go to something bad, you go to something bad in spite of being told that, in knowing that it is bad. So you go to something. अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा meaning आ रहा है. Abstain नहीं, misuse नहीं. You resorted to it. You did not misuse it actually. उसकी शरण में आप गए. So you avoid भी नहीं किया. Similar you have to take similar. Stayed ये resort है जो आप vacation में जाते हैं. उससे आपको confuse कराने के लिए ये choice दिया गया है stayed. ये भी नहीं. क्या होगा? Applied. आप resort करते हैं किसी चीज को, यानी आप उस चीज को apply करते हैं, आप उसकी शरण में जाते हैं, उसको use करते हैं. Then you have hazard. Hazard आपको बताया था वहाँ पे danger आ रहा था meaning. एक बार फिर से देख लीजिए hazard. Yes, it will result. And in fact resulted in an increase in moral hazard. So moral hazard is what? Moral danger among the eligible households.
सो हैजर्ड इज डेंजर, सेफ्टी, एश्योरेंस, प्रूफ, रियलिटी नहीं होगा। ड्रेन हमने देखा था कि वो ड्रेन होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, यानी बाहर निकल जाएगा। सो एक्यूमुलेशन, कलेक्शन, कंपोजिशन, एडिशन, ये सब तो ऐड करने के सेंस में है। ड्रेन हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, माइनस करने के सेंस में होता है। सो ड्रेन का हो जाएगा आउटलेट। आशुतोष सिंह 6 का आपने आंसर दिया 5 स्टेड। जैसा आपको बताया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि रिसोर्ट से, कि आप जाके किसी रिसोर्ट में रहते हैं, स्टे करते हैं, लेकिन यहाँ जो मीनिंग है एज यूज इन द पैसेज, इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें। एंड सो द आंसर ऑफ 6 विल बी 4। आनंद मिश्रा हैज गॉट इट राइट, 6 का 4। एंड देन आनंद मिश्रा 7 का 1 आ रहा है आपका, वो सही है। आशुतोष सिंह आपका भी आ रहा है, 7 का 1 सही है। एंड 8 का 5 आशुतोष सिंह, आनंद मिश्रा दोनों का आ रहा है, जो कि सही है। Let us now move on to the antonym questions. Choose the word which is most opposite in meaning of the word printed in bold as used in the passage. Rampant. Rampant कहाँ था? Corruption is rampant. जिन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, spread out पूरा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फैला हुआ ना हो। अब वो मीनिंग, क्योंकि ऑपोजिट है, तो फैला हुआ ना हो, कौन सा वर्ड है यहाँ जो फैला हुआ ना हो, मतलब लिमिटेड। सो दिस इज द एंटोनिम, लिमिटेड। नाउ हियर आर 2 words, flagrant and raging. Let us come to these words. Flagrant, ये अक्सर यूज होता है in terms like flagrant violation of rights. ह्यूमन राइट्स वाले अक्सर ये बात करते हैं, और जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सो फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ राइट्स, मतलब फ्लेग्रेंट का मतलब क्या हुआ? शॉकिंग। यानी इतना ज्यादा जो आपको दहला दे, वो फ्लेग्रेंट हुआ। एंड सिमिलरली रेजिंग, एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे रेजिंग। रेजिंग का मतलब क्या हुआ? पावरफुल। फ्लेग्रेंट इज दिस वायलेशन ऑफ राइट्स, इसमें यूज होता है शॉकिंग के सेंस में। एंड रेज, रेज मीन्स एंगर, रेजिंग मीन्स पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। और ये किस लिए यूज होता है, किसके, किन वर्ड्स के साथ यूज होता है? आप देखेंगे रेजिंग एपेटाइट, रेजिंग थर्स्ट, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। या फिर कभी कभी आप स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी, रेजिंग स्टॉर्म। रेजिंग हेडेक, अगर बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है आपको, उसको भी आप कह सकते हैं हैव ए रेजिंग हेडेक। So raging is used in so many senses. So coming back to our question, rampant का हमारे लिए क्या मीनिंग निकलता है? बस limited. So Anand Mishra has got it right, Rajiv Singh has got it right, and Anand Mishra अगले क्वेश्चन के साथ भी आ गए हैं। 10 का आंसर उन्होंने कह दिया है, 10 का 3 होगा। अभी देख लें, foregone, foregone जो आपने छोड़ दिया, तो जिसको पकड़ लिया यानी होल्ड किया, तो yes he is correct, hold, held। बाकी abandoned, abdicated, resisted, waived, ये सारा, ये तीनों तो छोड़ने के सेंस में, और resisted का थोड़ा अलग सेंस हो जा रहा है, तो इसलिए held करेक्ट है। तो आनंद मिश्रा gets it right again. Let us now move on to the next question. Each of the following statements has 3 blanks which are to be filled with the options given below. 5 words are suggested, out of which only 3 can fit the blanks. एक स्टेटमेंट है और 3 ब्लैंक्स हैं, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं 5। 5 words are suggested, 1 2 3 4 5, of which only 3 can fit the blanks। क्योंकि ब्लैंक्स हमारे पास 3 है, उन 3 ब्लैंक्स में भरना है। Find the right combination of words which when placed in the same sequence। अब यहाँ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 4 5
और 154 दोनों अलग अलग हो गया। किस क्रम में, अगर हम कह रहे हैं 431 हमारा आंसर है, इसका मतलब 4 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, सीक्वेंस में होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि कहीं पे कोई वर्ड फिट कर दिया। एज कैन मोस्ट सुटेबली कंप्लीट द सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, जो बेसिक मीनिंग है वो क्लियर रहना चाहिए। सो वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Each of the telecom regulator has dash between making wide-ranging dash on data protection generally, ignoring their impact on non-telecom sectors on the one hand, and dash to the Sri Krishna Committee on the other. Telecom regulator has dash, has done something between. So V3. अब V3 कौन सा है यहाँ पे? Entered और vacillated। entered and vacillated, ये दो आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए, so now between this and this स्ट्रक्चर को आप क्लियरली देखें। The telecom regulator has V3 between 1, which is making wide-ranging dash on data protection, ignoring their impact on non-telecom sectors on the one hand, and 2, dash to the Sri Krishna Committee on the other. और इसी पे ये पूरा sentence खेल रहा है। So you vacillate between one thing and the other. Vacillate, waiver. Now this is a different waiver. अब ये देखिए कि एक लेटर बदल जाने से मीनिंग कैसे बदल जाता है। Vacillate means waiver, not W-A-I-V-E-R, W-A-V-E-R, waiver. Waiver मतलब hesitate करना, कभी हाँ कभी ना करना। So that is vacillating. ये करें या करें। Then you vacillate between something, waver between something. So the word here will be vacillated, मतलब 3. तो यहाँ पे तो 3 होगा। तो जब 3 होगा तो अब कौन सा चॉइस है? बस एक ही मिलता है, ये। तो आप सीधे इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन आप एक बार चेक कर लें कि क्या होगा। तो वैसिलेटेड बिटवीन मेकिंग एंड, यहां पे इंग है तो यहां भी आईएनजी वाला वर्ड आएगा, और आईएनजी वाला वर्ड कौन सा है? डिफरिंग। So this will be 2 will be differing. So third blank में आपका 2 आ रहा है। So it's correct, 3 2 और यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर हम इसको substitute करें तो हम देखते हैं क्या sentence होता है ये। The telecom regulator has vacillated, क्योंकि एक बार meaning clear आना जरूरी है sentence का। ये तो grammar से काम हो गया, meaning भी आप check कर लें। Between making wide-ranging, 5 is what? Recommendations. Recommendation मतलब सुझाव। Yes, गोविंद कुमार, राजीव सिंह, आनंद मिश्रा, सबका 2 आया है, जो सही जवाब है। And 2 is what? Sorry, this vacillated, and 2 is differing. तो इस सेंटेंस का जरा हम मीनिंग देख लें। द टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज वैसिलेटेड, दो चीज के बीच झूलना, बिटवीन व्हाट? मेकिंग वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस ऑन डेटा प्रोटेक्शन जनरली, वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस देना, इग्नोरिंग देयर इंपैक्ट ऑन नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स। तो ऑन द वन हैंड ये है, एंड डेफरिंग टू द श्री कृष्णा कमेटी। डेफर करना मतलब, अब डेफर का भी 2 मीनिंग होता है। डेफर का एक मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, यानी आज का प्लान डेफर कर दिया, वी हैव डेफर्ड द प्लान। यस, आशुतोष सिंह, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। आशुतोष सिंह सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफरिंग? सो डेफर का एक मीनिंग तो होता है पोस्टपोन कर देना, लेकिन यहां पे क्या है? टू, नोट द वर्ड टू।
So defer to something मतलब क्या हो गया? Submit to something, yield to something. यानी आप क्या कर रहे हैं? उसकी बात को मान रहे हैं. तो श्री कृष्ण कमेटी जो कह रही है उसकी बातों को मान रहे हैं. So that is differing. Let us now move on to the next question, question number 12. Azad said, dash are created by forces who want to dash the communal dash in the country. अब देखिए फिर यहाँ पे बहुत ही आसान क्लू है are. Dash are created मतलब clearly we need a plural noun there. और इसमें से plural noun कौन सा है? एक ही है rumors. तो यहाँ तो पहला होगा. और उसके बाद अब वन कहाँ है? सिर्फ यहाँ है. तो क्लियरली ये आंसर होगा. बहुत ही आसानी से ये बन गया है. चॉइसेस ठीक से नहीं दिया हुआ है. एक बार पढ़ के देख लें कि वहाँ क्या होता है. अगर वन की जगह यहाँ रखेंगे हम रूमर्स और यहाँ पे टू डिसरप्ट यस आशुतोष सिंह का सही आ रहा है. 12 का 4 एंड द कम्युनल ये 4 की जगह हार्मनी. तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? आजाद सेड rumors are created by forces who want to disrupt the communal harmony in the country. Rumors कौन क्रिएट करते हैं? वे forces जो communal harmony को, सामुदायिक सौहार्द को disrupt करना चाहते हैं. To disrupt means to break. जो ब्रेक करना चाहते हैं उन्हें. और उसके बाद एक वर्ड आपका आ रहा है इसमें रैपो. तो किसी के साथ आपका अच्छा रैपो होता है मतलब क्या हुआ? रैपो का मतलब हो गया क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप. स्टूडेंट टीचर के बीच हो सकता है अच्छा रैपो बन जाए. हो सकता है दो फ्रेंड्स के बीच अच्छा रैपो बन जाए. यानी एक दूसरे की बात को समझ सकें. तो उसको कहते हैं रैपो. प्रोनाउंस रैपोर्ट लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ते हैं रैपो. So 12 का 4 clear है. Now move on to 13. The opposition said if the centre failed to take action against its own ministers and MPs who garland the dash of mob lynching, the dash of fake news could never be dash. अब ये सबसे पहले तो ये है यहाँ देखें could never be dash यानी बी के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का. तो वो रिजॉल्व है यहाँ 5. और 5 कहाँ है? थर्ड प्लेस पर इसमें है. तो शायद यही होगा आंसर. एक बार हम देख लें इसमें. अगर इसको हम भर के देखते हैं तो क्या आता है? शैलेन लछोरिया का भी 12 का 4 आया, सही आया. और आशुतोष सिंह का भी 13 में 5 आ रहा है. तो शायद हम लोगों का आंसर सही है. एक बार राजीव सिंह का भी आ रहा है. एक बार हम उससे देख लें. एन एम पीज गार्लैंड 5 में 2 क्या है? कल्प्रिट्स. एक बार पुट करके जरूर देख लेना चाहिए ताकि आप श्योर हो जाएं. ऑफ मॉब लिंचिंग द 4 यानी मेनेस. अभी हैजर्ड वर्ड हमने देखा था, ऐसे ही मिलता जुलता वर्ड है मेनेस. ऑफ फेक न्यूज कुड नेवर बी. 5 is resolved. The opposition said, opposition ने कहा, if the centre failed to take action against its own ministers and MPs who garland the culprits of mob lynching, माला पहना रहे हैं. किनको माला पहना रहे हैं? Culprits of mob lynching. मॉब लिंचिंग, आजकल लिंचिंग के काफी केस हो रहे हैं. आपने सुना होगा कि किसी को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया पूरा. ये जो लिंचिंग हो रहा है मॉब के द्वारा, उसमें कानून कहीं काम नहीं कर रहा है. पुलिस के रोल को मॉब ने अपना लिया है और लिंचिंग करने लगते हैं. सो दोज हु गार्लैंड द कल्प्रिट्स ऑफ मॉब लिंचिंग, ऐसे दोषियों को जो गले लगाते हैं, माला पहनाते हैं. तो अगर सेंटर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, द मेनेस ऑफ फेक न्यूज कुड. और ये अक्सर कैसे होता है? फेक न्यूज से होता है कि आप प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, झूठे मैसेजेस दे देते हैं. एंड सो ये जो डेंजर है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, रिजॉल्व नहीं हो सकता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो इट इज अपॉन द गवर्नमेंट टू बी
ऐसा इनका कहना है, ऑपोजिशन का कहना है कि ये सरकार का दायित्व है कि ऐसे तत्वों पर वो नजर रखें, तभी इस समस्या का समाधान मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prasad said a dash to educate school children about the misuse of social media for dash of false news will be dash up by the center. Again will be dash up by the center. तो B के बाद third form of verb चाहिए, तो clearly यहाँ पे taken to, ये जो second choice है, और second choice third में कहाँ है, यहाँ पे है, तो 14 का 2 हो जाएगा। एक बार फिर उसको put करके देख लें। 14 का third क्या है? campaign and then fifth, propagation, for propagation of false news. And will be 2 taken up by the center. ये क्या हो गया? प्रसाद said, प्रसाद ने क्या कहा? That a campaign to educate school children. Campaign क्या होता है? अभियान। किसी चीज के लिए जब आप अभियान चलाते हैं, that is a campaign. To educate school children about the misuse of social media for propagation of false news. Propagation means what? Spread. Rumor को propagate किया जाता है, news को propagate किया जाता है, और इसी से word बना है, propagate से word बना है, आपने सुना होगा propaganda. तो प्रोपेगेंडा मशीनरी काम करने लगती है कि किसी चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे फैलाया जाए। सो मीडिया फॉर a campaign to educate school children about the misuse of social media for propagation of false news will be taken up by the center. सेंटर एक अभियान चलाएगी जिसमें वो बच्चों को सिखाएगी, बच्चों को इस बात से हिदायत देगी कि किस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज होता है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ फॉल्स न्यूज। Yes, let us move on to the next question. Which of the phrases A, B, and C given below each sentence should replace the phrase printed in bold letters? अब यहाँ पे एक phrase है printed in bold letters, तो इसको replace करेगा to make the sentence grammatically correct. Choose the best option among the 5 given alternatives that reflects the correct use of phrase in the context of the grammatically correct sentence. इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होना है। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, मार्क 5, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड एज द आंसर। तो अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। फॉर जापान चाइना इज इंपॉर्टेंट टेकन द फैक्ट दैट इट इज द ओनली कंट्री टू मेंटेन क्लोज टाइज विथ नॉर्थ कोरिया। टेकन द फैक्ट, टेकन की बात होती है या गिवन द फैक्ट? गिवन द फैक्ट। गिवन का मतलब होता है टेकिंग समथिंग इनटू अकाउंट, यानी इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए। तो ये कह रहे हैं आशुतोष सिंह और राजीव सिंह कह रहे हैं 15 का 3, तो सी जो है गिवन द फैक्ट दैट इट इज, तो सी तो करेक्ट है। अभी देख लें। सो टेकिंग इनटू समथिंग इनटू अकाउंट, यानी इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए। फॉर जापान चाइना इज इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द फैक्ट, इसको हम कह सकते हैं गिवन द फैक्ट दैट इट इज द ओनली कंट्री टू मेंटेन क्लोज टाइज विद नॉर्थ कोरिया। अब बाकी एज और दैट से कुछ होगा क्या, ये भी देख लें, क्योंकि एक से ज़्यादा चॉइसेस भी रहते हैं। सो फॉर जापान चाइना इज इंपॉर्टेंट एज द फैक्ट दैट, नो। फॉर जापान चाइना इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज द ओनली गिवन फैक्ट, दैट इट इज द ओनली गिवन फैक्ट, ये तो इट्स टेकिंग अस इनटू कन्वोल्यूटेड टेरिटरी, ये सब नहीं हो सकता। सो यस 3, 15 का 3। Riya Raj has also come up with the answer, 15 ka 3. Yes, so these are correct answers. Let us now move on to question number 16. Yes, what will be the answer for question number 16? Let us see.
It is tempting to pass on the recent US action against India's export subsidies at the World Trade Organization as yet another example of the superpowers' growing economic aggression against trade partners. Pass on, ये phrasal verb पे है. Now, pass on का meaning क्या होता है? Means to die. Somebody has passed on. So that is to die. तो clearly ये तो नहीं हो सकता है. तो फिर क्या होगा? Pass off. सब जगह pass off है. You pass off something. मतलब किसी चीज को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हुए you just pass it off. If there is some remark or some comment, then you pass it off. Pass off का meaning क्या हो सकता है? Lightly dismiss. हल्के में ले लेते हैं आप उसको और कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं. So it's tempting to pass off the recent US action as yet another example of its economic aggression against trading partners. Economic aggression वो चल रहा है, उसी में इंडिया पे भी लगा दिया है. So it's just a part of it, so you pass that off. तो ये तो हो रहा है. Yes, Ashutosh Singh says 16 का 1, मतलब only A is correct. देख लेते हैं BC. To pass off, it is tempting the recent, ये कोई sentence ही नहीं बनेगा. To pass off, it is tempting the recent US action. नहीं. Passing off is tempting to. Passing off what? There is no object here. So this will also not do. Yes, only A is correct. Sandeep Kumar says, sir, please provide PDF of the model test paper. So you have not got the PDF of the model test paper? PDF of the model test paper इनको गया नहीं है, तो इनको जाना चाहिए. क्योंकि बिना उसके तो पता चलेगा नहीं ठीक से. खैर पावर पॉइंट स्लाइड्स आपके सामने हैं तो तत्काल आपका काम चल जाएगा. एंड रिया राज सेड सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर. सो ओके टू द टेक्निकल पीपल, नेक्स्ट टाइम दिस डज नॉट हैपन, because what I can see here, for me the screen is clear, but I think the output on your screen is not very clear. So please zoom in the slides. I think that's fairly big enough so you can see that. So zooming is not required at this juncture because we have been doing with these slides. So the problem lies with, maybe it lies with resolution or the color or the font that has been selected. Maybe there is some problem with it. So in the next class, certainly this should not be the problem. The technical people should take care of this. According to WTO rules, countries can give export subsidies as long as only their per capita GNI is below $1,000. According to WTO rules, countries can give export subsidies. कब तक दे सकते हैं subsidies? Only as long as their per, ये only कहाँ पे लगेगा? As long as, तब तक, as long as only their per capita GNI, यानी बाकी conditions ना हो, only their per capita GNI is, नहीं, ये only यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे आना चाहिए only को. तो जो choice यहाँ आपको दिया है वो है कि only as long as their per capita GNI is below $1,000. तभी तक, जब तक कि export subsidies तभी तक दे सकते हैं, only as long as, तभी तक, only as long as their per capita GNI is below $1,000. बाकी इसमें apply नहीं होगा, so only C is correct. Now let us move on to question number 18. One might argue that expecting a country to change a plethora of export subsidy schemes, plethora of means plenty of. Yes, Katyani Singh says the answer is 3. To which one? Question number 17. Yes, 17, the answer was 3. So one might argue that expecting a country to, now we are in question number 18.
One might argue that expecting a country to change a plethora of export subsidy schemes, including extremely popular ones like the Merchandise Export from India scheme, MEIS, used across sectors, as a drop of a hat, could be considered as. Now, what is this? As a drop of a hat. It's just your understanding of the idiom, and the idiom is at the drop of a hat, so no problems here. It has to be B, only B is correct. Now, what does at the drop of a hat mean? At the drop of a hat means without hesitation. Someone asks you to do something, and you do it at the drop of a hat. You don't ask any questions. You simply do it. That is doing things at the drop of a hat. Ashutosh Singh is correct, 18-2. Then you have question number 19. India's efforts to establish that it would be fair to extend the same dispensation to all have not borne fruit yet at the WTO. This born, B-O-R-N-E, this is the V3 form of bear. Bear, V3 is, bear, bore, born. So to bear fruit, to have positive results. So India's efforts to establish that it would be fair to extend the same dispensation to all have not borne fruit yet at the WTO. अभी तक उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुए हैं. So this is a correct one, no correction required. Question number 20. India cannot afford to be caught being napping the second time round when the WTO is ready to pronounce judgment on the matter. To catch someone napping. Catch someone napping. Now what is nap? Nap is a short sleep. तो कोई थोड़ा सा ऊँग रहा है, ऐसा आपने उसे पकड़ लिया. Catch someone napping. ऊँग रहा है मतलब क्या है? He is off guard. गार्ड का काम है जग कर प्रोटेक्शन देना. लेकिन होता क्या है, दिन में अगर वो कुछ काम कर लेते हैं तो रात वाला गार्ड फिर सोने लगता है. सो दैट इज, एंड सो यू कैच समवन नैपिंग, यू कैच हिम ऑफ गार्ड कि अरे ये तो अभी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है. इंडिया कैनॉट बी अफोर्ड टू बी कॉट. अब इसका जब पैसिव बनेगा तो पैसिव क्या हो जाएगा? टू बी कॉट and napping will follow. So the passive phrase will be to be caught napping. So India cannot afford to be caught napping. Ye. Ashutosh Singh is right, 20 ka 1. India cannot afford to be caught napping the second time round when the WTO is ready to pronounce judgment on the matter. So 20 ka 1. Now 21 to 25. In the questions given below, a short passage is given. Now here is a passage with 5 blanks numbered 21, 22, 23, 24 and 25. 21, 22, 23, 24 and 25. 5 phrases numbered A, B, C, D and E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. ये 5 फ्रेज दिए हुए हैं आपको. Are given that fit in the blanks appropriately. यानी 5 ब्लैंक और 5 फ्रेज. कौन सा फ्रेज कहाँ पे फिट करेगा? काफी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही आप एक को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा आसान हो जाता है. अब आपके पास चॉइसेस कम हो जाता है. Select the appropriate phrase for each blank from the given options. Ensure that the tone of the passage does not change. यानी टोन सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग, उसका कहने का लहजा कुछ बदल जाए. So how to use uncanny in a sentence? He has an uncanny knack for solving puzzles. तो इस तरह से आप uncanny को यूज कर सकते हैं. He has an uncanny knack for solving puzzles.
but that is beside the paper that we are discussing here. And don't bother about how to use words in a sentence. Read. The more you read, you'll come across such usages, and then they will become your own. So instead of taking words and trying to make sentences with them, go through sentences. And if you go through a number of sentences, you will certainly make that word your own. But in case you are interested in just finding sentences, then also you can just type on your mobile and uncanny followed by sentences, and you'll come across a number of sentences that authors have used over the years. So a substantial amount of cooperation exists between India and China. Both countries are members of the BRICS, and India dashed the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB bandwagon. Starting from mid-June this year, India and China dashed over China's construction of a road in the Doklam region of Bhutan, claimed by China. However, during former Indian PM Manmohan Singh's stint, dashed a joint statement that there is enough dash both China and India to grow. And the choices are: A, the two countries noted in; B, was one of the first countries to jump on; C, space in the world for; D, on a host of issues; and E, had been locked in a tense standoff. अभी देखते हैं इसमें से क्या हम फिट कर सकते हैं. A substantial amount of cooperation exists between India and China. The two countries noted in was one of the first countries to jump on; space in the world for; on a host of issues. ये तो फिट लग रहा है. On a host of issues. Yes, Ashutosh Singh also says 21 का D. So a substantial amount, and what is E? A substantial amount of cooperation exists between India and China had been locked in a tense standoff. नहीं, meaning नहीं निकल रहा है. So D, yes, so D is gone. 21 का D. अब देखिए काम आसान हो गया, आपके पास choices कम हो गए. Both countries are members of the BRICS, and India dashed the Asian infrastructure bandwagon. Now this is bandwagon. Bandwagon आते ही आपको कुछ clue मिलता है. Jump on the bandwagon. So jump on the bandwagon. देखिए jump का यहाँ पे है, jump on. So this must be 22 का 2. Now jump on the so what is this? Both countries are members of the BRICS. मतलब India and China both are members of the BRICS. BRICS is what? Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And India was one of the first countries to jump on the Asian Infrastructure Investment Bank bandwagon. ये बीजिंग में ये बैंक खोला गया, China में. And India was to jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon means what? कि bandwagon चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है. कौन सी गाड़ी? जो fashionable है, जो अभी vogue में है. You jump on that bandwagon. आप उसको join कर लेते हैं. So you start doing, jump on the bandwagon means start doing something fashionable. फैशनेबल मतलब जो उस समय चलन में है, जो उस समय फैशन में है. तो सब लोग जो काम कर रहे हैं वो आप भी स्टार्ट कर देते हैं. लगता है कि हाँ इससे कुछ होने वाला है, चलो अब होड़ लग गई है सब में, स्टार्टअप का जमाना आ गया, सब लोग स्टार्टअप खोलना शुरू कर देते हैं. सो यू आर जंपिंग ऑन द स्टार्टअप बैंडवैगन. .com का जमाना हो गया है, सब लोग .com खोलना शुरू कर देते हैं कंपनी. यू आर जंपिंग ऑन द .com बैंडवैगन. यस, कुछ लोगों ने काफ़ी आंसर्स दे दिए हैं. जब तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग आंसर्स के साथ तैयार हैं. सो 22 का बी आ रहा है आशुतोष सिंह का और गोविंद कुमार का, जो कि सही आ रहा है. देन वी मूव ऑन टू 23. स्टार्टिंग फ्रॉम मिड जून दिस ईयर, इंडिया एंड चाइना डैश ओवर चाइनाज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इन द डोकलाम रीजन ऑफ भूटान. ये क्वेश्चन मिड जून दिस ईयर पहले का है, तो इसलिए इसमें पैसेज है. So India and China dashed over China's construction of a road. ये क्या था? इनके बीच लड़ाई चल रही थी. So they were locked in a tense standoff. India and China had been locked in a tense standoff. So 23 का E.
This is what Ashutosh Singh had answered. 23 का E, गोविंद कुमार का भी आंसर आया 23 का E. और किस बात पे ये स्टैंड ऑफ था इनके बीच? ओवर चाइनाज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इन द डोकलाम रीजन. आपको याद होगा एक काफी गर्म इशू था कि डोकलाम, भूटान के डोकलाम में चाइना कैसे रोड बना रहा है. हाउएवर ड्यूरिंग फॉर्मर इंडियन, तो ये तो नेगेटिव साइड है, लेकिन हाउएवर करके टोन बदलते हैं पैसेज का, पॉजिटिव करते हैं. ड्यूरिंग फॉर्मर इंडियन पीएम मनमोहन सिंह स्टेंट डैश जॉइंट स्टेटमेंट. नाउ डैश, अब क्या क्या बच गया? ए और सी. द टू कंट्रीज नोटेड इन ए जॉइंट स्टेटमेंट, ये तो क्लियर आ रहा है. स्पेस इन द वर्ल्ड फॉर ए जॉइंट स्टेटमेंट नहीं. सो द टू कंट्रीज नोटेड, तो 24 का ए हो जाएगा और जो बच गया वो 25 का सी हो जाएगा. तो आंसर के लिहाज से तो आ गया, मीनिंग इसका देख लें. हाउएवर ड्यूरिंग फॉर्मर इंडियन पीएम मनमोहन सिंह स्टिंट, उनके कार्यकाल में, उनके ब्रीफ का, the two countries noted in a joint statement that there is enough space in the world for both China and India to grow. काफी आसान सेंटेंस है ये. तो अब आंसर्स देखें. 24 का एक इनका आया है, आशुतोष सिंह का भी आया है और गोविंद कुमार का भी आया है. और 25 में है C, which Ashutosh Singh का भी आया है, गोविंद कुमार का है. And Ashutosh Singh claims I got all correct. So congratulations Ashutosh for getting all correct. Let us now move on to the next set of questions. Question 26 to 28. Rearrange the following sentences A, B, C, D, E, F, and G. A, B, C, D, E, F, and G to make a coherent paragraph without changing the tone of the paragraph. Coherent paragraph बनाना है. Sentences को इस कदर arrange करना है जिससे कि उनका मीनिंग क्लियरली निकले. It was only after the end of the Cold War and the breakup of the erstwhile Soviet Union that they decided to renew their ties in the wake of new geopolitical realities. Mark the word they. ये किसी को रेफर कर रहा होगा पिछले सेंटेंस में. इसमें ध्यान ये देना है इस तरह के सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में कि कैसे लिंक क्रिएट होता है. तो इसमें दोनों मीनिंग पे भी ध्यान रखना है और आपको कुछ ग्रामेटिकल जो फंक्शन से मदद मिलेंगे. जैसे दे है तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा जो इसके प्रीसीडिंग सेंटेंस में होगा. तो इन वर्ड्स पे आप ध्यान दें. These efforts, now these efforts, इसका मतलब इसके पिछले सेंटेंस में कुछ efforts की बात हो रही होगी, कुछ प्रयास किए गए होंगे. These efforts led to the formulation of the Look East policy, later renamed the Act East policy, which aimed at New Delhi re-engaging with Southeast Asia and East Asia. While several concerns about India's relationship with China have existed during this time, so again, पीछे कुछ time के बारे में बात हुई है. There are many factors bringing Tokyo and New Delhi closer. Since then, यानी पीछे कोई point की बात हुई है. Bearing the dip in the ties in light of India's 1998 nuclear tests, the bilateral ties have forged ahead. In his landmark speech, Confluence of the Two Seas, delivered in August 2007 during his earlier stint as the Japanese PM, Shinzo Abe remarked that the Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity. अब ये देखिए, ये एक independent sentence लग रहा है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे यहाँ देख रहे थे किसी न किसी को रेफर कर रहा है. इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है. So independent. और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो उसका फर्स्ट सेंटेंस होने का चांस बनता है. नॉट नेसेसरली कि होगा, आपको और भी चीज देखना है, बट एटलीस्ट इट गिव्स यू अ क्लू दैट मे बी द. एंड आशुतोष सिंह सेज जी विल कम फर्स्ट. लेट अस सी. In spite of the historical connection between the two countries, which date back many centuries, they drifted apart. Again, they. So, इसके पहले कोई sentence है. As New Delhi inched closer to the Soviet Union after its independence in 1947, while Japan became a strong ally of the US. Over the past decade, the geniality between Japan and India has increased, a sharp contrast to the lukewarm relationship that previously existed. So, again, this also is an independent sentence. So, या तो ई पहला सेंटेंस होगा या जी पहला सेंटेंस होगा. इतना हम कंक्लूड कर पा रहे हैं. अभी देखते हैं अब आगे क्या होता है.
अगर हम आशुतोष सिंह जी की बात मान लें और जी से शुरू करते हैं तो देखें, ओवर द पास्ट डेकेड द जीनियलिटी बिटवीन जापान एंड इंडिया हैज इंक्रीज। अब ये बहुत जगह दे जो आया था वो इन्हीं दो कंट्रीज को रेफर कर रहा है, जापान एंड इंडिया। अ शार्प कंट्रास्ट टू द ल्यूकवार्म रिलेशनशिप दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। अब ये सेंटेंस बहुत कुछ कह जा रहा है। ओवर द पास्ट डेकेड the geniality between Japan and India has increased. Geniality, warm relations between Japan and India has increased. A sharp contrast to the lukewarm relationship that previously existed. पहले कैसा relationship था? Lukewarm, यानी warm से भी कम। warm दिखाता है, lukewarm कम warm था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें गर्माहट नहीं थी रिश्ते में। So, and now geniality has increased. यानी हिस्ट्री दिखाता है कि पहले ये कम था और बाद में ये बढ़ गया। तो ये अब दे वाला कोई सेंटेंस आएगा तो या तो एफ आएगा या ए आएगा, ये दो जगह दे मिल रहा है। अभी हम देखते हैं जी के बाद पहला सेंटेंस तो आशुतोष सिंह जी ने कहा हमें जी लेने के लिए, हम जी ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि F को डालें या A को डालें। Now it was on, इन दो sentences को पढ़ें आप। It was only after the end of the Cold War and the breakup of the erstwhile Soviet Union that they decided to renew their ties in the wake of new geopolitical realities. यहाँ क्या हो रहा है? Relationship improve कर रहा है। और यहाँ in spite of the historical connection between the two countries, which dates back many centuries, they drifted apart as New Delhi inched closer to the Soviet Union after its independence in 1947, while Japan became a strong ally of the US. परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि न्यू दिल्ली को सोवियत यूनियन की तरफ जाना पड़ा, जापान को यूएस की तरफ जाना पड़ा, तो दे ड्रिफ्टेड अपार्ट। इन स्पाइट हिस्टोरिकल कनेक्शन तो था पर दे ड्रिफ्टेड अपार्ट। सो ये रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है? पुअर रिलेशंस। और यहां हम क्या देख रहे थे? जीनियलिटी हैज इंक्रीज्ड और प्रीवियसली क्या था? ल्यूकवार्म रिलेशन। तो पहले को क्या था? एफ था या ए था? पहले एफ था, ल्यूकवार्म रिलेशन। ये पुअर रिलेशंस है यानी ल्यूकवार्म, और ये इंप्रूव हो गया तो ये क्या दिखा रहा है? जीनियलिटी। तो ये क्लियर है कि जी के बाद एफ आएगा और एफ के बाद ए आएगा। इस क्रम में चीजें इंप्रूव कर रही हैं। एंड दीज एफर्ट्स, वेयर आर द एफर्ट्स? दे डिसाइडेड टू रिन्यू देयर टाइज इन द वेक ऑफ न्यू, दिस इज दे डिसाइडेड टू रिन्यू देयर टाइज इन द वेक ऑफ न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। ये तो एफर्ट है, एफर्ट लगा रहे हैं। So these efforts led to the formulation of the Look East policy, later renamed the Act East policy, which aimed at New Delhi re-engaging with Southeast Asia and East Asia. तो GFAB इस तरह का कुछ लग रहा है आएगा। अब इसके बाद देखते हैं, yes, आशुतोष सिंह says then F then A, तो ठीक है, अभी तक हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, then B, ठीक है। अब आगे देखें फिर क्या है। अब क्या सेंटेंसेस रह गए हमारे पास? D एंड C। E को अभी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। Now D and C. While several concerns about India's relationship with China have existed during this time, there are many factors bringing Tokyo and New Delhi closer. Since then, अब during the same phase, since then मतलब कब? कोई पॉइंट होगा। So the point is what? C में आ रहा है पॉइंट या B में आ रहा है? कहाँ आ रहा है आप ये देखें। तो formulation of Look East policy, now this becomes a point, formulation of Look East policy। तो इसलिए D C को नहीं रेफर करेगा, D B को रेफर करेगा, then D is here। And then since then, barring the dip in the ties in the light of 1998 nuclear tests, bilateral ties have forged ahead। जब से ये Look East policy वाली बात हुई है।
और ड्यूरिंग दिस टाइम, अब हम 98 से अभी तक के पीरियड को ले लें तो ये ड्यूरिंग दिस टाइम को रेफर करेगा. सो GFADBC, while several concerns about India's relationship with China have existed during this time, there are many factors bringing Tokyo and New Delhi closer. तो इतने सेंटेंस तो आ गए हमारे पास, अब रह गया ये E. In his landmark speech, Confluence of the Two Seas, delivered in August 2007, during his earlier stint as the Japanese PM, Shinzo Abe remarked that the Pacific and Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity. अब इसको कहाँ पे डालें? Now this is a challenge for you. तो आप बताइए कि इस E को कहाँ डालें? तो आप अगर देखेंगे तो इस तरह के sentences generally introduce करने के लिए लोग देते हैं, so that it makes an impact. और इसको फिर आगे बता रहा है sentence G. So the best place in my opinion will be if you put it here, E. So Ashutosh Singh says E will be last. अगर आप E को last में डालते हैं, so it will come abruptly. मानस मेहर से सर क्लास का टाइमिंग क्या है? इस क्लास का टाइमिंग 12 बजे से है और आपको थोड़ा सा हम ब्रेक देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर आपका 2 बजे से शुरू होगा जो मैथ्स का होगा. ये आज के लिए है, आज का जो क्लास का टाइमिंग है. रेगुलर क्लासेस के बारे में ये नहीं है. आपका जो आज स्पेशल मॉडल पेपर का डिस्कशन हो रहा है उसके लिए ये टाइमिंग है आपका. मेरे लिए इंग्लिश 2 बजे से है, 12 बजे से था, और जो आपका मैथ्स का पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो 2 बजे से होगा. रीजनिंग ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है. तो आशुतोष सिंह, इफ यू पुट ई एट द एंड तो ये एब्रप्ट आ जाता है कि यहाँ पे सारा कुछ कहा और फिर अचानक क्यों बोलने लगेंगे ये शिंजो आबे साहब. सो चांसेस आर दैट दिस शुड कम एट द बिगिनिंग बिकॉज एज आई सेड such sentences are used to introduce a topic. That in his landmark speech, Shinzo Abe said this, and then that thing is being elaborated throughout the passage. The Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling, and this dynamic coupling is then being elaborated throughout the passage. So Ashutosh Singh agrees. So when both of us agree, then chances are that this should be the correct one. E.g. FABDC. But you don't have to leave it there. एक बार जब आपका आ जाता है इस तरह से करके, इस तरह से जम्बलिंग को सॉल्व करके, it's like solving a puzzle. तो फिर एक बार आप टेस्ट करके देख लें कि ये sentences क्या हैं. So I'll just read it out. E.g. FABDC and just see whether it makes sense. In his landmark, अब इस order में हम पढ़ेंगे E.g. FABDC. In his landmark speech, Confluence of the Two Seas, delivered in August 2007, during his earlier stint as the Japanese PM, Shinzo Abe remarked that the Pacific and the Indian Oceans are now bringing about a dynamic coupling as seas of freedom and of prosperity. Over the past decade, the geniality between Japan and India has increased, a sharp contrast to the lukewarm relationship that previously existed. In spite of the historical connection, now the lukewarm relationship is being described here. In spite of the historical connection between the two countries, which dates back many centuries, they drifted apart as New Delhi inched closer to the Soviet Union after its independence in 1947, while Japan became a strong ally of the US. It was only after the end of the Cold War, the lukewarm relationship Cold War ke samay mein chala, and then geniality increased. It was only after the end of the Cold War and the breakup of the erstwhile Soviet Union that they decided to renew their ties in the wake of new geopolitical realities. And now these efforts led to the formulation of the Look East policy, later renamed the Act East policy, which aimed at New Delhi re-engaging with Southeast Asia and East Asia. Since then, barring the dip in the ties in light of India's 98 nuclear tests, the bilateral ties have forged ahead. So the only dip was 98 nuclear tests. So Look East policy ke baad se, it has been a smooth ride ahead. Rajiv Singh says 26 to 30 GFA DBC. He is missing E. E sentence bhi hai. So 6 sentence ko hi nahi hame karna, hame 7 sentences ko karna hai. So Rajiv Singh, just take care of that. Yes, where were we?
FAB, these efforts led to the formulation of Loki's policy. Since then, barring the dip in the ties in the light of India's 98 nuclear tests, the bilateral ties have forged ahead. While several concerns about India's relationship with China have existed during this time, there are many factors. Concerns किसके साथ रहा है? With China. There are many factors bringing Tokyo and New Delhi closer. China के साथ तो परेशानियां रही हैं, लेकिन India-Japan relationship इस period में अच्छा होता रहा है. So I think this is correct, e.g. FABDC, and then we can easily answer the questions. Which of the following will be the second and fourth sentence respectively after the rearrangement? Second and fourth. Second is G, fourth is A. So GA. GA, yes. Then we have which of the following will be the last three sentences after the rearrangement? Last three sentences. BDC. Last three sentences are BDC. BDC 27:1. Then which of the following sentences will come immediately after the second sentence? In other words, the third sentence. Second sentence will be followed by the third sentence. So हमें यहाँ पे third sentence ढूंढना है. Which is the third sentence? F. So the answer will be 2. So 26:3, 27:1 and 28:2. Now the last two questions. We are now coming to the last two questions. Read each sentence to find out whether there is any error in it. Now this is an error detection question, but its format has been slightly changed. Read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one or more sentences. So you have to find error, no error. Then choose the sentences without error as your answer. Here, the correct sentences, the choice of correct sentences has to be chosen. If there is error in all the sentences, then your answer is 5. So if it is 1, 2, 3, 4, then it's correct sentence. And if none of the sentences are correct, which means error in all the sentences, then your answer is 5. All are incorrect. So only A means only A is correct. Both A and B means both A and B are correct. But 5 means all are incorrect. तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा correct और incorrect के बीच. Rajiv Singh has given 26, 27, 28 answers. So that's not much big deal once we have seen EG, FAB, DC. Now, अब इसमें से देखना है कौन कौन से sentences correct हैं और अगर सारे incorrect हैं तो फिर 5 answer होगा. Choose the sentences without error यानी correct sentences. The interest elasticity of consumer durables, housing and investment as well as working capital needs makes manufacturing demand most sensitive to interest rates. Now, ये needs makes एक जगह आ रहा है थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप ध्यान से देखें कि ये है क्या. Here the verb is this, and this is the subject, and this is the object, and this is the complement. The interest elasticity of consumer durables, housing and investment as well as working capital needs makes, मतलब what makes? Needs makes नहीं है, interest elasticity makes manufacturing demand most sensitive to interest rates. So this is a correct sentence. Now falling inflation indicates more correctly that aggregate demand is low in relation to capacity. Falling inflation indicates more correctly that aggregate demand is low in relation to capacity.
Now, in the copybook style, we have been told that correct का ये नहीं हो सकता है, comparative degree नहीं हो सकता है. लेकिन often this is used कि more correctly. तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है. A higher share of services sector growth implies a lower capital output ratio, which augur well for future growth. ये augur किसके लिए आ रहा है verb? Ashutosh Singh says 29.1. 29.1 मतलब A. और अभी यहाँ देखें हम क्या है. A higher share of services sector growth implies a lower capital output ratio, which augur well for future growth. तो ये augur नहीं होके, because ये which किसको refer कर रहा है? Higher share को, singular noun. So this should be augurs. S लगना चाहिए. तो ये तो incorrect हो गया. तो अब आपके पास रह गया choice, या तो A होगा या both A and B होगा. ये it's a thin choice, but since this usage has now become accepted more correctly, falling inflation indicates more correctly that aggregate. copybook style में तो correct का more correct नहीं होता है, because you are either correct or you are not correct. लेकिन आजकल ये comparison आपका खास करके when it's used as an adverb होने लगा है, so we'll have to give that. So I think you should go for 4, though I cannot be 100% sure. Maybe if the author is, if the paper setter is a traditional one, then he'll go for 1, as Ashutosh Singh says. But as per my view, if he has taken sentences that, sir, aggregates may come. Where is aggregates? No, aggregate demand. No, this is as an adjective. So this is correct. No problem with that. Aggregate demand. So it would be better to take this also as correct. It would be better. I can't be 100% sure, because some element of uncertainty does remain in such papers. So both A and B are correct as per me. Now, the last question. Question number 30. The WTO's last ministerial meeting in Nairobi in 2015 has laid out a clear mandate that a permanent solution on the issue of public stockholding for food security should be in place by December 2017. Now here we have two actions in the past. Laid out a clear mandate, and what was that? That should be in place. So the first action is what? Laying out of clear mandate. Now we know past perfect tense kya hota hai? When two actions are there in the past, then the previous action is in past perfect. So this, and here it is present perfect. Present perfect to ho hi nahi sakta hai simply. So this has to be had laid out. The WTO's last ministerial meeting in Nairobi in 2015 had laid out a clear mandate that a permanent solution on the issue of public stock holding for food security should be in place by December 2017. So this is incorrect. The high reliance on market borrowings threatens the sustainability of state finances as higher borrowings raise yields and the cost of debt. This seems to be a correct sentence. The high reliance on market borrowings threatens the sustainability of state finances as higher borrowings raise yields and the cost of debt. आप इस तरह से divide करें, sentence आसान हो जाएगा. The high reliance on market borrowings threatens the sustainability of state finances as higher borrowings raise yields and the cost of debt. Then C. So this is a correct sentence. And C. The liquidity position of several states has been improving, as is evident from the rising trend in states' intermediate treasury bills and auction treasury bills balances. Again, seems to be a correct sentence. The liquidity position of several states has been improving,
as is evident from the rising, as is evident from what? From the rising trend in states' intermediate treasury bills and auction treasury bills balances. So this is also a correct sentence. Now what was the direction? The direction said, choose the sentences without error as your answer. Matlab correct sentences. You have to choose the correct sentences. B and C are correct. So only B and C. I can see Ashutosh Singh again has the right answer. 30 ka 2. So with that, we come to an end of this paper. So what I'll ask you is to keep on practicing such papers so that PT का जो आपका रहेगा POPT is no problem at all, and then also focus on the mains exams because the real test lies there. PT of course you have to clear, but the story doesn't end there. You have to practice for the main paper, which is a lot more difficult. तो अगर जिनका primary level जिन लोगों ने pass कर लिया है, please focus on the main paper, and so that you're finally through और interview पर भी ध्यान देते रहें. Wish you all the best. Thank you.